Hello, 17 September 2022, time 1115 hours. We have reached the world famous Pangong Lake. You can see the lake right behind me, as also the props of the three idiots also parked here. I came here about 3 months ago, and that was on 6th of June that I spent one night in one of the local resorts, and that happened to be a night of swirling winds and missing oxygen. I had recorded a video even at that time wherein I had mentioned that what can actually go wrong in this place and what all precautions one must take when you come here. So I'm back because I had committed that if I can go out of this place safely on 7th of June morning, I was supposed to be doing a kind of a ritual. So that ritual is completed today since I've come here, and it gives me a great pleasure and my utmost thanks to my wonderful wife Aparna for allowing me to come back to Pangong so early. But hopefully next year she and I would be back, because that's the time we are going to scale Umlingla. So we look forward to that. Enjoy the scenery of Pangong behind me. I'm going to record a video without me in front. Pangong, a lake of immense beauty, swirling winds, changing colors, lies about 40% on the Indian side and 60% on the China side. This lake is a marvel. It's a saltwater lake, and there are many stories associated with it. This place has been completely run down over by the tourism sector, and I sincerely pray and wish that all the tourists who come here and visit this preserve the sanctity of this lake and maintain its pristine beauty. Nothing can be better than what I am seeing right now. Punch. 17 September 2022, time 1230 hours. Right behind me is the Pangong Lake, and we are flying the flag of India 75 years and the flag of Foxtrot Squadron from the National Defence Academy. It's a wonderful moment. This is a beautiful place. Once in your lifetime, you must come and stand on this axis, which is going towards Trishul, and we are on our way to the wonderful Rizangla Memorial in the Grey Fox. See you. Hey folks, standing just on top of Mighty Pangong with the flying prayer flags and the winds moving all around us as if they are circling us and blessing us. It's a very rare feeling. We are seeing some crazy blue, turquoise and fantastic colors all around us. The cloud cover is still. There are mountains with fresh snow, mountains with absolutely grey, feeling cannot be felt. And like I've been saying, if you can ever make it to this part of Ladakh, do not miss it for anything. It's crazily beautiful. September 2022, time 1605 hours. What an honor to be actually at a Tirath Sthan, which is the Rizangla Memorial. If you do not know about this place, I think sometime in your life you must do a Google or you must go to the YouTube to find out what exactly happened here. 13,000 or 1300 enemies which came from the other side of the hill on that side versus 114 brave men of 13 Kumaon, and they engaged in a fierce battle. A battle which lasted for 16 long hours and led by a very valiant Major Shaitan Singh. We have all heard his name, especially people of my generation who have been growing up. These were the stories
which we heard from our fathers and from our mothers. So today is one of the most, I should say, well-lived day of my life, that I could come to this place, the Rizangla Memorial, and to meet with some of the most wonderful troops who are stationed here, and the story and the way they conducted this entire tour, it's actually worth the visit. So please find out some time in your life, and if you feel that you're fit to come on these heights, this place is situated at 14,400 feet, and that is Rizangla. It's at 16,000 plus, I think, about Shul at about 18,000 feet. If you can, come and stand here. You can see the large expanse of a wonderful land, and you will be very, very proud about your army, what the soldiers have done here, and this is what exactly it is. Have a great day. Thank you. 19 September 2022, time 0939 hours. Just left a strategic location somewhere in the eastern Ladakh, and you can see the topography ahead of me. The hills have multiple colors, and I have a new co-passenger who's traveling with me. We are going to take a stop after about 4 or 5 hours of driving today, and we'll keep you posted as to what is being planned ahead. So keep looking out for this space, folks. Enjoy this wonderful scenery which is ahead of me, and on my right, which you cannot see right now, is River Indus. I was there last evening, sat on the banks of Indus, and inhaled most of the oxygen that was available in that area. You can see one snow-clad peak right ahead. Some really wonderful and amazing sights, that how in this place in Ladakh, how the colors actually change. Amazing. Good morning, 20th September 2022, time 0600 hours. We have left Karu, and as we said, we are going to blaze the rough and on our way to Manali. So wish us luck. This video is going to bring you some great account of what happened in today's journey. My co-passenger today is, बताइए अपना नाम? R.S. Tripathi. R.S. Tripathi from a regiment of the Indian Army. So he's going to be my companion, and I think both Trips and I are going to learn a lot about each other. Neck warm, body warm, head warm as of now, as we begin our climb for the first pass of the day, which is at 17,653 feet. You guess. 20th September 2022, time 1025 hours, and here we are crossing the pass number 2. Let's take you to Lachungla, altitude 16,616 feet. This is a Shaurya Chakra RCC. A great honor to be here. The third time that I'm crossing this particular pass. The weather today has been very cold, and we have met with some snow on the way. Not getting down from the car because today we have a long distance to cover, and we were here about 5 days ago and also 3 months ago. So enjoy your stay and have a great time. We'll catch up with you when we cross the third one. Thank you. तो देवी और सज्जनों, आज मेरे साथ कारू से मनाली जा रहे हैं R.S. त्रिपाठी जी। अब त्रिपाठी जी के लिए भी ये रूट पहली बार है। मैंने मनाली टू ले 2 बार किया है, लेकिन कारू टू मनाली मेरे लिए भी पहली बार है। अब हम दोनों ने सक्सेसफुली 2 पास पार कर लिए हैं, संगलांगला और लाचुंगला।
त्रिपाठी जी ने रास्ते में गरम पराठा भी खाया पान पे, मैंने मैगी खाई, चाय हम दोनों ने सेम पी। तो कैसा लगा त्रिपाठी जी? बहुत ही सुंदर लगा साहब आपके साथ यात्रा करके, बहुत ही आनंद आया साहब इस यात्रा में। गाड़ी कैसी चली? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एवरेज स्पीड से लगातार चलते रहे। एहसास ही नहीं हुआ कि हम गाड़ी में बैठ करके और यात्रा कर रहे हैं। वाह। तो अभी त्रिपाठी जी जो हैं उन्होंने एक चमत्कार कर दिया आज सुबह। वो अपना पर्स जहाँ पे हम ठहरे थे कारू में वहीं भूल के आ गए। पर मैंने इनसे आज एक चीज़ सीखी कि जब भी आप कहीं पे रहें तो उस जगह पे जो भी केयर टेकर है उसका मोबाइल नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। वो त्रिपाठी जी ने मोबाइल नंबर लेके रखा था, तो इन्होंने पांग से उसको फ़ोन किया और अपने पर्स को मूव करा दिया। तो अब पर्स भी एक डाक में मूव करेगा और त्रिपाठी जी मेरे साथ मूव करेंगे। बिल्कुल ये बहुत अच्छा किया तुमने। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। तो चलिए आगे मिलते रहेंगे, त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। So good morning, 16 September 2022. Time is about 11 o'clock in the morning, and today I've met the first cyclist on the road to Changla Pass, and that is Rajat. And I saw him really bringing up his bicycle, and Dilbar is the song which is going on in his ears. And बहुत अच्छा लगा रजत से मिलके। And I asked him कहाँ जा रहे हो? तो he said pass. वो कहते हैं कि मेरे को पास चढ़ना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। This is the spirit. He's coming from Manali. I think 460 kilometers till Karu, and Karu के बाद another 30. संस्कार से आ रहा हूँ। Zanskar से आ रहे हैं अभी। So you can imagine the kind of thing. Rajat, I wish you all the best. Thank you. कि आप ये कर पाओ। ये डस्ट से आपको कोई तकलीफ? ये जो डस्ट उड़ रहा है यहाँ पे बहुत नहीं, इतनी तकलीफ, थोड़ी खांसी है बस। खांसी हो रहा है ना। तो मैंने मेरे पास गाड़ी में कुछ गोंद के लड्डू पड़े हुए थे, तो मैंने कहा रजत मैं तुम्हारे को लड्डू खिलाता हूँ। ये भी और ये भी, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। तो रजत ने मेरे से पूछा कि आप नेवी में हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं नेवी में था, सबमरीन चलाता था। तो एक बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ, और अभी पास काफ़ी ऊपर है। रजत, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच कि आप जल्दी से ऊपर चढ़ें और उसके बाद आपका मिशन सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होना पड़ेगा। ग्रेट, ऑल द बेस्ट रजत। ओके, बाय बाय। थैंक यू। Okay, 20th September 2022. Time 1410 hours. I'm sitting at Baralachala Cafe at a place called Zing Zing Bar, which is about 130 odd kilometers short of Manali. And यहाँ पे आके मेरी मुलाकात हुई फिर से रजत से। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो रजत हमको मिले थे जब हम चांगला पास चढ़ रहे थे, और वहाँ से हम आगे गए थे तांगस्ते, और तांगस्ते के आगे फिर हमने चुशूल और रेजांगला कवर किया था। तो आज जब यहाँ पे घुसे तो देखा कि रजत यहाँ पे विराजमान है, और बड़ा अच्छा लगा रजत को मिलके, और रजत के साथ बहुत बातचीत हुई। लेकिन रजत आज आपको कुछ बताना चाहते हैं कि इनको कैसा लगा हम लोगों से मिलके? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, कि मतलब अचानक से मुलाकात हो गई इतने टाइम के बाद। तो चांगला में जब मैं क्लाइंब कर रहा था तो मतलब इन्होंने इतनी हेल्प की मेरी। मतलब वहाँ पर चांगला की एक तो क्लाइंब इतनी खतरनाक क्लाइंब है, इतनी ब्रूटल क्लाइंब है कि 11,000 फीट से आपको 17,500 फीट तक आपको क्लाइंब करना पड़ता है। बीच में खाने का कोई ढाबा नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं बिना सोचे समझे जो है बस साइकिल उठाई और बस क्लाइंब के लिए निकल गया मैं कि भाई चांगला पास क्लाइंब करना है। तो उस टाइम इन्होंने प्रोटीन बार और मतलब वो लड्डू वगैरह दिए, उसकी बदौलत ही मैं ऊपर पहुँचा हुआ। नहीं तो विदाउट एनर्जी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर साइकिलिंग। आई थिंक कि जो गुड विशेज़ रजत ने हमारे को उस दिन दी थी, वो गुड विशेज़ के सहारे जो मेरे साथ मेरे को पैसेंजर कर्नल रवि राजन और मैंने रजत के बारे में बहुत बातें करी। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हम ये सोच रहे थे दोनों कि ये लड़के ये क्यों करते हैं, ये साइकिल लेके 11,000 से 17,500 फुट तक साइकिल लेके कैसे चले जाते हैं, जब कि ये जो हम 4x4 गाड़ियाँ चला रहे हैं। और जब हम चांगला पे पहुँचे तो वहाँ पे भयंकर सर्दी पड़ रही थी। वहाँ पे हमको प्रत्युषा मिली, जो लड़की एक काइनेटिक 125 पे पूरा वो सर्किट कर रही थी। बट आई थिंक जो गुड विशेज़ रजत ने उस दिन हमारे को दी, और उसके बाद जो भी हमारे साथ घटनाक्रम हुआ, जो भी हमारा बचाव हुआ, मुझे लगता है कि ये वही गुड विशेज़ है रजत। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक दूसरे के साथ देके, हाथ पकड़ के, मजबूती से एक दूसरे को सहारा देके हमेशा आगे बढ़ना है। तो आज रजत और मैं बैठ के चाय पी रहे हैं इकट्ठे यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया। और आते ही इन्होंने मेरे से पूछा कि आपके साथ जो थे वो कर्नल साहब वो कहाँ हैं, तो फिर मैंने पूरी इनको दास्तान बताई। तो बहुत ये एक सरप्राइज़ है कि कहाँ चांगला, कहाँ बारालाचला, और कहाँ ये बारालाचला कैफ़े, और कहाँ जिंग जिंग बार।
Geographically, if you plot it on the map, these distances are big. So ये सरचू में थे लास्ट नाइट. अभी वेदर यहाँ पे पैक्ड अप है, बारिश हो रही है, ऊपर स्नोफ्लेक्स गिर रहे थे. तो होपफुली आज रजत भी घर पहुँच जाएंगे अपने मनाली, अगर वेदर ठीक रहा तो, नहीं तो मैक्सिमम कल तक. तो ग्रेट, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. बांटते चलिए लोगों के साथ, मिल बांट के हर चीज़ करिए. जो आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिए. उनका हाथ पकड़िए, उनको हाथ पकड़ के आगे लेके चलिए, क्योंकि आप किसी का हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे तो कल को शायद आपको भी कोई हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा. यही बात मैं बोल सकता हूँ. क्यों रजत? थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. और अगले साल ये उमलिंगला जा रहे हैं तो मैं इनको गुड विशेस देना चाहता हूँ. और जब तुम उमलिंगला करोगे तो मेरे को ज़रूर फ़ोन करना. मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा एक अच्छा गियर मैं स्पॉन्सर करूँगा. ग्रेट शो, थैंक यू. Time 1800 hours, 28 September 2022. Place Daraf, we started from Karu today morning, has come to an end here at Manali. And this goes out very specially to you, Colonel Ravi Rajan, my co-passenger in the Grey Fox. We started on 10th of September and I am finishing it on 20th of September. Tomorrow's ride to Delhi will be just completely fun. And here I am flying again, Pakistan flag and India flag at 75 and the Grey Fox. We've done it, sir. We'll do it again. Over. Good evening, 28th September 2022. Time is 2230 hours and finally this Blaze the Rough run is over. I have come back to Delhi from Manali. It was raining all the way and I really missed my co-passenger Colonel Ravi Rajan, who should be with us at New Delhi tomorrow. This was overall a wonderful experience and many thanks to all the wonderful people who tracked us and followed us, and especially on the Foxtrot Old Boys group and the Irregulars Friends Forever. That's my course mates. I'm happy to you bring forth to you the adventure that we went through. Sincere apologies that we did not complete it, but yes, there were reasons as to why it did not happen. We left Delhi on 10th, reached back on 28th. There were 2 rest days, and apart from those 2 rest days, on 8 days, I was clocking about 11.5 to 12 hours per day. Crossed 12 passes, high passes in these 8 days, and kept the motto, which is there right on my cap, which was presented by the Commandant of the National Defence Academy. Took the harder right instead of the easier wrong. We'll be back with you with some more. It is not over yet. There are some things more which must come out to you so that you really understand as to what went north and what went south. I'm happy to finish this close to 16.5 hours of wonderful drive, out of which about last 6.5 hours have been absolutely alone with the Grey Fox. She's performed well. There was no stone and there was no height and there was no pass where this vehicle didn't go without giving me any trouble. It was absolutely a smooth drive. Really thoroughly enjoyed driving it. Its comfort was unimaginable. So thank you folks for following me, and absolutely double thumbs up for the wonderful time that you spent with me over the last 10 days. Looking out for bringing more and more things to you. Have a great day ahead, please.